हाय गाइस, सिन्हा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया एक ब्रॉन्ज गॉडेस में। मीन्स आज मैंने ब्रॉन्ज मेकअप लुक किया है एंड आई एम लिटरली वेरी हैप्पी विद दिस लुक। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड आज तो एक प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट मैंने यूज़ किया, जैसे खास करके मैंने आइसक्रीम कॉन्टोर यूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिंगर से भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हाईलाइटर मैंने मुझे मुझे इतना ज़्यादा हाइलाइटर पसंद है, मुझे तो मैं कहता मैं हाइलाइटर में ही नहा लूँ। बट या आज हाइलाइटर भी दूसरा यूज़ किया है मैंने और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं शाइन कितनी ज़्यादा नेचुरल है। आई लव दिस हाइलाइटर। सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लगाएंगे सेरम और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनवेदा का ग्लो एंड रेडियस ब्लेंड। पंप खराब है इसका भी। तो गाइस देख सकते हैं मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डल हो गया। आई डोंट नो व्हाई। मैं जब भी कोई भी फेशियल ऑयल लगाती हूँ या फिर सेरम, फेस सेरम, तो मेरा स्किन का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डल हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे प्राइमर और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। सो नेक्स्ट अब हम लगाएंगे फाउंडेशन और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर एंड आई एम इन द शेड 120 क्लासिक। आई बहुत अच्छा फाउंडेशन है, मतलब सारे स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। तो आप अगर ट्राई करना चाहते तो ये जरूर ट्राई कीजिए। मस्ट ट्राई, मस्ट हैव प्रोडक्ट है ये एक्चुअली। टू पंप्स। सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया हमारा फाउंडेशन। नेक्स्ट हम लगाएंगे कंसीलर और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैक का कंसीलर। नेक्स्ट अब हम अपने फेस को सेट करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे अपने आईब्रोज को फिल। सो गाइस नेक्स्ट अब हम करेंगे आई मेकअप और मैं लूंगी ये शेड और इसे एज ए ट्रांजिशन शेड यूज करूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है ये। नेक्स्ट हम लेंगे ये शेड और अपने क्रीज लाइन पे लगाएंगे। सो नेक्स्ट हम लेंगे ये शेड। ऐसे ये तो है कंटूर शेड बट मैं इसे एज आई शेडो यूज करूंगी और देखूंगी अगर
इतना मतलब डीप कलर मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं थोड़ा ब्लैक भी मिक्स करूँगी। थोड़ा सा ब्लैक बस हल्का सा डिप भी करना है। सेम शेड को लेके हम थोड़ा अपनी क्रीज लाइन पर और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लेंगे ब्राउन शिमर आई शेडो, दिस वन राइट हियर। हम ये शेड लेंगे और एक्स पे लगा लेंगे। Looking so good guys, देखिए आप तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। I'm just loving this eye makeup. नेक्स्ट करेंगे ब्लेंड दोनों कलर को। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे आईलाइनर, कोई विंग नहीं लगाएंगे, बस सिंपल आईलाइनर। नेक्स्ट हम वही ब्राउन शेड लेंगे और अपने लोअर लैशेस पे स्मज ऑफ कर लेंगे। सो नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्टूरिंग, और आज मैं करने वाली हूँ क्रीम कॉन्टूर, फर्स्ट टाइम है वो। देखते कैसा होता है। अच्छा है या नेक्स्ट हम करेंगे नोज कॉन्टूरिंग। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता नोज कॉन्टूरिंग करना, बट आज हम कर रहे हैं ब्रॉन्ज मेकअप, सो वो तो जरूरी ही है, सो मैं ब्रश से करूँगी। नेक्स्ट अब हम करेंगे ब्राउजिंग, और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का बिग ब्लश एंड हाइलाइटर। इसमें बहुत ही अच्छा ब्राउजिंग शेड है और शिमर है इसमें, तो हम यही शेड यूज करेंगे। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे ब्लश, और मैं ये प्रिटी और शेड यूज कर रही हूँ, और ये दोनों शेड मिक्स करके मैं ब्लश लगाऊंगी, बिकॉज ऊपर वाला थोड़ा पिंकिश है और नीचे थोड़ा ब्राउनिश है, सो मिक्स करके लगाएंगे हम। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, और ऑब्वियसली ब्राउन ही लगाएंगे।
सो दैट्स इट टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे मेकअप लुक्स ना तो आपको पता चल सके। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे मेरा यूजर नेम दिख जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पर फिर भी मैं बता देती हूँ मेरा यूजर नेम है @_Rashmi_Sinha। सो या मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।